I am Professor Devendra Singh and taking the course on machine design, and this is our 12th lecture, and the topic we are discussing about design against dynamic load. So, we will discuss about the infinite life design, and before going to infinite life design, we will discuss about the modifying factors of various modifying factors of the endurance limit. So, the outline of this lecture is surface finish factor, then size factor we will discuss, the reliability factor, temperature factor and stress concentration factor, and then we will move to the infinite life design problems. So, what is surface finish factor? When we were discussing about the mechanism of fatigue failure. So, there were two steps, one is the initiation of crack and second stage is the propagation of crack. So, crack may be of the surface scratch and hair like stretch is a scratch may cause the initiation of the fatigue failure mechanism. So, this is very important factor which we should use to modify our the lab or specimen endurance limit. So, for this Sigley and Misick gives an exponential relation uh, based on the ultimate tensile strength and the value of surface finish factor is a SUT raised to power b. So, if SUT is known, we can decide some value of surface finish factor and that surface finish factor we will use to modify the endurance limit. And for deciding this some values constants on the basis of experimental data of Knoll and Nipson gives by this Sigley for A and B. So, if our material is grounded, the surface finish is the grinded component is grounded means grind finish is there, then A is 1.58 and B is 0.085. This is point with negative sign, and if it is machined or cold drawn, then it is 4.51 A and minus 0.265 is B, and if the component is hot rolled, then A value of A is 57.7 and the value of B is minus 0.718. Forced, if it is forced, then the value of A is 272 and B is minus 0.995. Just put the value of A, B and SUT decide the K A surface finish factor. We also having the various curves in our design books to use to use for our numerical and design problems. Then the size factor, if we use a bulk of material, if bulk of material is large, then देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर हमारा बल्क मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स में बी हाई और उनमें से कोई भी डिफेक्ट एक क्रैक का काम कर सकता है और अगर ये क्रैक का काम करेगा तो फर्दर आप कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस अगर लगा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टेट, कोई भी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस होगी तो ये क्रैक फर्दर प्रोपेगेट करेगा और क्रैक अगर प्रोपेगेट करेगा तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया विल गेट reduced, and if the effective cross section area will get reduced, then the stress level will become high and it may get fail, and in the condition of fatigue failure that we have discussed, that is a physical fracture may take place. So, to avoid that situation, we introduce a factor, size factor, which will which consider the effect of the bulk. So, for cylindrical components, and it is for bending and torsion only, for bending and torsion. So, if diameter is less than 7.5 millimeter, then the size factor is denoted by Kb,
the size factor is 1. If it is 7.5 millimeter or less than 7.5 millimeter, then the value of size factor we can use 1. It means it will not affect much, and the effect may be ignored. And if the diameter of the component is lying between 7.5 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर, अगर डायमीटर 7.5 से 50 मिलीमीटर के बीच में है, then we have to reduce 15% tenderness limit, means this kb, the size factor we will use is 0.85, and if it is this is wrong, if it is more than 50 millimeter, if it is more than 50 millimeter, then the size factor will be 0.75, that we use for the cylindrical, but it may not be necessary कि every time we have a cylindrical object, it may be non-circular cross section. So, then Cogley given some equalities, according to that equalities we need to find out 95% or 95% of the area where the area of the cross section where 95% or more than 95% of the maximum stress takes place, that area we will consider, and we will compare it with equivalent area with the other cross section, and we will get some value here. So, for that purpose we can consider, we can have this a circular member, we can have circular member. This is subjected to the bending, and if bending is having a linear variation from center. So, this is the bending stresses, bending stress distribution. So, if we consider, then what then only a ring shaped area जिसका डायमीटर 0.95 डी और आउटसाइड डायमीटर डी है, ये एरिया होगा जिसमें 95% या 95% से ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस हो रही होगी. सो A95 we can get pi by 4 d naught square minus d I square. And this is equal to pi by 4 0.9 d square minus 0.95 d square. I think it will be 0.0766 d square, A95. Now, this area we can compare with some other areas that may be, this is a rectangular area, that may be the rectangular area, this is B, this is H. So, here A95 जिस एरिया में 95% ये नॉन रोटेटिंग है, दिस इज नॉन रोटेटिंग and a bending is applied. So, A95 will become 0.05 BH.
Now, if I get DC, I replace this D, I replace this D by DC. So, DC is equals to what? A 95 divided by 0.0766 with under root. Now, if A 95 I replace with this and then equate, I will get, or I 95 I just place here, then DC I will get a equivalent diameter. I will get equivalent diameter of this solid rectangular beam, which is subjected to a bending moment, and this D I will use here. This can be replaced by DC and we will use these relation again to determine the KB. मकसद हम किसी रोटेटिंग शाफ्ट के लिए बात करें ट्रांसवर्स में बैंडिंग के हिसाब से A95 वी हैव कैलकुलेटेड A95 दैट इज द एरिया वेयर 95% और द मैक्सिमम स्ट्रेस के 95% से ज़्यादा स्ट्रेस जहाँ ऑकर हो रही है वो एरिया बनता है 0.0766 डी स्क्वायर वन टाइम द कैलकुलेशन में बी चेक्ड but as far as my memory says this is 0.0766 d square, and then we will take another cross section which is not circular in section, that is a rectangular section having the width जिसकी चौड़ाई b है और जिसकी गहराई h है. तो इसमें ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया यही 95% या उससे ऊपर का बैंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे होगी. अगर हम इसे बैंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं तो ये बनेगा इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ये 95% बनेगा इतने एरिया में, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊं. ये एरिया दैट विल कम आउट 0.05 BH. जब A95 की जगह मैं रख दूँ 0.05 BH, B एंड H मस्ट बी नोन एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 0. ये यहाँ से लिया मैंने इस एक्सप्रेशन से. सो आई कैन कैलकुलेट द इक्वलेंट diameter of the cylindrical object corresponding to this rectangular section, and we can easily find out what should be the value of size factor. So, this is the way. Then the reliability factor. हम कुछ भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं तो एक चीज़ है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी ये चीज़ है कि किसी भी इक्विपमेंट को, सिस्टम को आपने ख़रीदा, उसको इंस्टॉल किया, वो कितने समय तक डिज़ायर्ड फंक्शन के साथ सर्वाइव करता है, पर्पस सर्व करता है, दैट इज़ कॉल्ड द रिलायबिलिटी फैक्टर. यहाँ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन अगेंस्ट द स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिलायबिलिटी फ्रॉम स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर हमें रिलायबिलिटी बढ़ानी है तो जो स्ट्रेंथ है उसको हम कम लेके डिज़ाइन करेंगे तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी. तो अगर रिलायबिलिटी 50% है, 50% रिलायबिलिटी मीन्स कि आप कुछ चीज़ ली, 50% चांसेस हैं वो जो भी क्लेम कर रहे हैं वो उसको वो सर्व करें, और 50% फेलियर. एग्जाम्पल की आप एक दुकान से बल्ब खरीदे, बल्ब वाले ने अपने होल्डर में लगाया, बल्ब वाले ने, दुकान वाले ने होल्डर में लगाया और कहा कि आप इसे ले जाइए, देखिए यहाँ जल रहा है, अब घर जाके जलेगा कि नहीं जलेगा. जल गया, बहुत अच्छा. नहीं जला तो 50% जल सकता, 50% नहीं जल सकता. तो हमारा फैक्टर, उसने कोई रिस्क नहीं लिया. स्ट्रेंथ जितनी थी उसमें कोई चेंज नहीं किया, तो इसमें केसी रिलायबिलिटी फैक्टर 1. लेकिन अगर ये रिलायबिलिटी आगे बढ़े, वो क्या 90% मैं दावा करता हूँ कि घर जाके काम करेगा, तो उसमें आप ये फैक्टर्स की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे. जैसे जैसे रिलायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, डिज़ायर्ड रिलायबिलिटी की डिमांड इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे ये केसी फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है. हमारा जो एंड्योरेंस लिमिट है, एंड्योरेंस लिमिट
उसको मॉडिफाई हम करते हैं, जितने भी फैक्टर हैं के ए, के बी, के सी तक, के ए सरफेस फिनिश फैक्टर, के बी इज द साइज फैक्टर, के सी वी आर डिस्कसिंग दिस इज रिलायबिलिटी फैक्टर, के डी is the temperature factor, and Kf is the factor for stress concentration, and then we get some Kf, Kg, that is miscellaneous factor S prime E. तो यहाँ पे अगर इन किसी की वैल्यू 1 से कम है, सो वो जो हमारी लैब्स एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आई है उसको घटाएगा, तो स्ट्रेंथ फेलियर होने के चांसेस कम होंगे, इस तरीके से रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी. सो वी शुड रिमेंबर एट 50% रिलायबिलिटी, दिस इज इन ऑलवेज इन परसेंट, 50%, 90%, 95%, 99%, 99.99%, 99.99, 90.99, 99.999%. So this is 1, 0.897, 0.814, 0.753, 0.702 and 0.659. If the reliability is 99.999%, then the reliability factor we use 0.659. This is the reliability factor. Then we go to stress concentration effect. Before stress concentration effect, we should also discuss, I forget, that S prime E. If SN diagram is not there, then what should be the value of S E. So यहीं पे लिखता हूँ मैं S E. I forget to give this. S E is prime is 0.5 times of SUT if SUT is less than or equal to 1400 megapascal, and S prime E is equals to fixed 700 megapascal if SUT is greater than 1400 megapascal. We should always remember. And SE, this is modified endurance limit, is Ka, Kb, Kb, Kc, Kd, Kf, Kg, S prime E. This is now the stress concentration effect. What is stress concentration? हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत जगह ये रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन एरिया को एब्रप्टली चेंज करना पड़ता है. अगर एरिया एब्रप्टली चेंज होता है तो वहाँ पे स्ट्रेसेस लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट. एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसमें हम दें कि अगर ये एक ब्लॉक है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, ये P, दूसरी तरफ भी रिएक्शन आएगी, और अगर बात करें तो ये मटेरियल के अंदर फ्लो कर रही हैं, जिनको हम बोल रहे हैं मैकेनिकल फोर्स ऑफ लाइंस. दिस इज टेंसाइल, this is tensile. State uniform distribution, and at each and every section the density of the force is uniform. But if I draw or drill a hole here, I draw the hole here, mechanical force of line cannot travel in the air, cannot travel in the vacuum,
free space. We need some material to travel a mechanical force of lines. सो यहाँ पे जैसे ही हमने ड्रिल किया तो यहाँ से मटेरियल निकल गया, मटेरियल है तो यहाँ इसको मीडियम ट्रैवल करने के लिए नहीं होगा, और अगर मीडियम ट्रैवल करने के लिए नहीं होगा, अगर मीडियम ट्रैवल करने के लिए नहीं है तो या तो ये ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज दीज लाइन्स ऑफ फोर्सेस विल बैंड like this, this may bend like this is straight. So, we can observe this area where the density of force of lines increases. मैं कहूँ इतना ही फोर्स है, इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ वही फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिंग एरिया है दैट गोज डाउन, वो घट गया है. सो इसका विसिनिटी में इस डिसकंटिन्यूटी को जहाँ होल किया आपने, यहाँ एब्रप्ट क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, सो इसकी विसिनिटी में, इस डिसकंटिन्यूटी की विसिनिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज डेंसिटी बढ़ गई, फोर्स बढ़ गया, एरिया घट गया, सो वहाँ पे स्ट्रेस इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई इन द विसिनिटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट. सो we can say what is stress concentration effect. This is, first of all, this is localized effect. This is localized effect. The increase in magnitude, or we say what is effect, we need to define the effect. This is localized effect, correct. This is localized effect. So, we write the induction of high magnitude stresses, high magnitude stresses in the vicinity of any discontinuity is called stress concentration. And the discontinuity is called stress razor. This may be a hole, this may be an abrupt change in the cross section area like an stepped shaft. We have to provide some means to fight against the stress concentration. जैसे हम कहते हैं ये होल है, सो हम स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली ज़्यादा बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि एक लोकलाइज्ड इफेक्ट ख़त्म हो. तो हम इसके आसपास क्या कर सकते हैं, इसके आसपास छोटे छोटे
होल बना दें ताकि ये बड़े एरिया में हो जाए। सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है और स्ट्रेस कंसंट्रेशन मॉनिटर हो कंट्रोल हो जाता है। एंड इफ इट इज स्टेप्ड शाफ्ट then we provide fillets, because in steps up also an abrupt change in the cross section area takes place. Then we can have some threaded fasteners. So in threaded portion there is a stress concentration, so we just drill some hole in the shank portion to make a uniform distribution of the stress, and thus stress concentration effects may be controlled. We may have multiple notches if some notch takes place, which may cause the abrupt change in the cross section area. So, primarily the reason of stress concentration is the abrupt change in the cross section area. So, to fight against this stress concentration effect, we have to incorporate, we have to introduce one factor that is called the stress concentration factor. So, in fact, stress concentration factor in design we use two types. One is for ideal condition, ideal material, that is isotropic, and the homogeneous, that is called the theoretical stress concentration factor or the geometrical factor, and other one in the real condition, that is called the fatigue factor, and this we will discuss in the next lecture. So, this is for today. So, thank you very much.